बिकॉज वो ऐसा है ना कि आप जितना भी एग्जांपल लो उसके अंदर एक डाउट, एक एक्स्ट्रा डाउट आते जाता है. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. एज पर द सिलेबस वी नीड टू फिनिश दिस इन एग्जैक्टली 1 hour, सो आई डोंट फील लाइक दैट वी बी डूइंग जस्टिस टू इट. बट या आज देखते हैं, अगर हो सके तो हम कोशिश करते हैं खत्म करने की. आई हैव आल्सो टोल्ड वेयर यू कैन रीड अबाउट दोस थिंग. सो you can go and Neso Academy, there is a YouTube channel. You can go in digital electronics and you can get the appropriate content over there as well. Okay, so if I try to waste all the time over here, so aage ka topic which is quite difficult, that would be left behind. Okay, so we'll have to somehow we'll have to manage that. Okay, so yeah, so I'll just give you the basic idea ki how to do it. Okay, so I'll take a quick revision. I hope everybody has joined. So 60 people have joined, 10 लोग और बचे. Yeah, we'll start with the lecture and we'll soon get into it. Okay, so last class में we have studied कि K-map is again one of the way जहाँ पे आप boolean algebra को यूज करके boolean function को आप reduce कर सकते हो, या दूसरा तरीका है आप K-map के थ्रू भी आप एक boolean function को reduce कर सकते हो. And what is the need of reducing it? The basic use of reducing, the basic necessity of reducing any boolean function is to reduce the overall gate that is being required in order to solve for that particular function. उस function को solve करने के लिए जो gate लगेगा, उस gate को आपको basically reduce करना है. Okay, so that can be done either by using boolean algebra, जो हमने already देख लिया है. For that you require boolean laws. और दूसरा तरीका है K-map का. उसके अलावा और भी तरीके, but that is not a part of the syllabus. K-map is there, definitely there. So that is why we are saying about the K-map. सो K-map जो है वो आप जनरली आप 2 वेरिएबल पे भी अप्लाई कर सकते हो, 3 वेरिएबल पे भी अप्लाई कर सकते हो, 4 वेरिएबल पे भी अप्लाई कर सकते हो. सो जितने भी वेरिएबल पे आप अप्लाई करोगे K-map, उसके अंदर जो सेल होगा वो सेल विल बी इक्वल टू 2 raised to नंबर ऑफ वेरिएबल्स. दैट इज द एग्जैक्टली नंबर ऑफ सेल्स दैट यू नीड टू ड्रॉ. सो अगर मेरा 3 वेरिएबल पे अप्लाई कर रहा हूं तो हाउ मेनी सेल्स विल बी देयर इन K-map? 8. इट विल बी 8 सेल. सो मुझे K-map कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा. ओके, so 8 cells अगर होंगे, so it will be 2/4 का मुझे K-map बनाना पड़ेगा. ओके, so जो 2 है which is 0 and 1, this I have to make it as my MSB, and MSB is generally A. Okay, and बचे हुए जो LSB है which is BC, that I need to keep at the column. Okay, so column में क्या बचेगा? We'll have 0 0, then we'll have 0 1. 1 0 आना चाहिए, but 1 0 we cannot write because we are switching 2 states. So I need to keep 1 1 over here, and then I need to make 1 0 over here. So if you try to convert it into binary, change of 2 states or more than 1 state. 2 states का चेंज करता है. ओके, सो मोर देन 1 स्टेट होने की वजह से क्या होगा? देयर इज नो कंडीशन जहां पे a प्लस a बार आपका कंडीशन है और ये 1 बन जाए, या b प्लस b बार कॉमन आ जाए, जो बच जाए और बाकी सब चीज कॉमन हो जाए. सो ऐसा कोई कंडीशन नहीं होने की वजह से क्या होगा? आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे. ओके, so that is why this situation is not at all allowed. Okay, what is the situation allowed? By making a pair of 2, either this one or this one. Is it clear? Yes sir. Is it clear? Yes, sir. Any other possibility in pair of 2? Any other possibility? Corner. Corner का हो गया ना मेरे ख्याल से. this वाला, this corner and this corner has been done. This corner and हो this गया सर. हो गया ना सर? हो गया. Yeah. Yes sir. So total how many different possibility I can have? I can 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. I think 12 possibility है ना मेरे ख्याल से. Yeah. Yes sir. Yeah. So total I can make 12 pair out of the 8, or you can say 3 variables. I can make total 12 pairs का group. Okay. One. The fourth criteria क्या? What is the fourth criteria? I can just have individual 1 left. Yes, okay, individual 1 left. अगर ऐसा भी situation आएगा जहाँ पे कि
एक वो जो एक 1 है वो किसी भी ग्रुप में नहीं आ रहा है, ऐसा पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल. हाउ इट इज पॉसिबल? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. हो सकता है पूरे ट्रूथ टेबल में सिर्फ और सिर्फ एक ही 1 है, बाकी सारे 0 है. अब ये ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा? विल इट बी देयर और इट विल नॉट बी देयर? Yes, sir. ये अकेला इंडिविजुअल ही बनेगा. ओके, यू कैन नॉट मेक इट एज अ पेयर में या कहीं और आप उसको ऐड नहीं कर सकते. तो इसका अकेले का रहेगा, और अकेले में जो भी वैल्यू रहेगी, वॉट एवर इज द रिस्पेक्टिव वैल्यू, जस्ट इन दिस केस इट इज 0 एंड दिस इज 1 0. सो इट इज 0 1 0. 0 1 0 is nothing but a bar b c bar. A bar B C bar. So the overall equation will be a bar b c bar. Okay, so आपको कोई ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं, इंडिविजुअल एलिमेंट को आपको लेना पड़ेगा. ओके, इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. अनदर रूल. सो ये तो पेयरिंग की बात हो गई, ये तो पेयरिंग की बात हो गई. कई बार ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि जहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है. अब आपको पेयर कैसे बनाना है? आप ये दो का पेयर बना सकते हो या ये दो का पेयर बना सकते हो, बराबर ना? तो इसमें क्या होगा, ये 1 is getting repeated, this 1 is getting repeated. Repetition is allowed. Okay, repetition you can do, but यही चीज बार बार आप करोगे, that is not allowed. Redundancy is not allowed. Okay, repetition is allowed but redundancy is not allowed. What is the meaning of redundancy and repetition? अगर आप यही ग्रुप को दो बार ले लोगे, एक बार ले लिया फिर से वही लोगे, that is not allowed. Redundant is not allowed. But repetition, this one can fall in multiple groups, but the whole group cannot be repeated again. The whole redundancy is not allowed. Is it clear? Yes, Is it sir. clear? या तो अगर आपको ये 1 और ये 1 दिख रहा है और ये 1 दिख रहा है, अगर आपने इसको एक ग्रुप में ले लिया, आपको लगा ये तो ऑलरेडी ग्रुप में आ गया, इसका इंडिविजुअल बनाऊंगा, तो दैट इज नॉट अलाउड. यू नीड टू, ग्रुप बन रहा है तो आपको ग्रुप बनाना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट लीव दैट ग्रुप. ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. देयर माइट बी अ सिचुएशन, Yes, एक स्पेशल केस ये भी आ जाता है. ओके, व्हाट इज अ स्पेशल केस दैट आई कैन हैव इज दिस वन. Yeah, I'll have this one, this one, this one, and this one. Okay, so what all group that I can make? एक ये हो गया, एक ये हो गया. या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मैं ऐसा ले लूं, ऐसा लूं Yes, और ऐसा sir. ले लूं, 3 ग्रुप ले लूं. ओके, सो जब 3, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, दोनों भी आप ले सकते हो. लेकिन अगर आप ये लोगे तो इस केस में ये दोनों ऑलरेडी आ चुका है. इन दिस केस दिस विल बिकम रिडंडेंट, एंड वो अगर आप सॉल्व करने जाओगे ना तो वहां पे रिडंडेंट हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली वहां से डिलीट हो जाएगा. इट विल गेट डिलीटेड. Okay, so that is why we use K-map in order to get a common result, and generally in all the K-map you will get exactly common result. Okay, if you try to solve, just a second. Yeah. So what I wanted to say is कि you can have something of this sort जहाँ पे आप ग्रुप कुछ ऐसा भी बना सकते हो. ओके, और अगर आप चाहो तो एक तीसरा ग्रुप भी ऐड कर सकते हो. बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, जो कि ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. सो दिस ग्रुप विल बिकम रिडंडेंट. ओके, ये रिडंडेंट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. जब आप उसका सोल्यूशन निकालोगे, इट विल गेट डिलीटेड ऑटोमेटिकली. ओके, बट यू ट्राई टू अवॉइड सच केसेस. आप रिडंडेंट केसेस को अवॉइड करने की कोशिश करो. इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Yes, sir. So we'll quickly take an example. Okay, all of you please solve for that. Okay, so what is example? F a comma b comma c. Okay, the summation of min term, and what are the min terms that I'm having? I'm just giving a random example. Okay, 0 1 2 6 7. Solve for this and tell me the answer. जो जिनको आ रहा है वो फटाफट करो, जिनको नहीं आ रहा है I'll solve for them. Okay, so first of all what I need to do, I need to construct a K-map. What is the size of the K-map should be? It is, how many cells it will have?
8. 8. It will have 8 because I've got 3 variables, so I'll have 8 cells. Okay, so it will be A written down over here, which will be the row, and the column will be BC. So column row kya hoga? It will be 0 1, and column will be 0 0 0 1 1 1 and 1 0, because of which it will become M0, this will become M1, this will become M3, this will become M2, this will become M4, M5, this will become M7. Why M7? Because it is 1 1 1 1 1 1 is nothing but 7. That is why it will become M7. What is this? It is 6 1 1 0 is 6, so it will become M6. After getting this, I'll just change the color. Yeah, after getting this, what we need to do, जहाँ पे भी min term दिया हुआ है आपका, उस min term की position पे what you need to put, over there? 1. So I'll put 1 over here, I'll put 1 over here. Why? Because this is 0, this is 1. As per the question, 0 और 1 पे 1 है, फिर 2 पे 1 है. Where is 2? This is where it is 2. I'll put 1 over here. Then 6 and 7 पे, 6 पे 1 and 7 पे 1. Okay, what about the rest of the places? It is 0. 0. Okay, after doing this, the first rule says that please make a group of 8. Is it possible to make a group of 8? No, Everybody sir. please say me, tell me the answer. It is not No, sir. possible, because सारे के सारे 8 ग्रुप के लिए सारे के सारे 1 होने चाहिए, but सारे के सारे 1 5 और 1. So can I make a group of 4? Is it this possible? Just check the condition. या No, चार sir. 1 एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे, No. यहाँ पे नहीं आ रहे, यहाँ पे नहीं आ रहे, so that is also not possible. Then after that, please try to check, can I make a group of 2? Can I make a pair? Yes, Yes. sir. It is possible. I'll just change the color. I'll take a color. कौन सा color? कौन सा color? कौन सा Red. color? Blue. Yeah. So I'll make this as one group. This one is still remaining. So can I take this as one group, or can I make one as individual group? सर स्क्रीन पे कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है. वॉइस भी गई. Am I audible? Am I सर audible? ब्रेक हो रही है आपकी सर कुछ वॉइस. सुनाई नहीं दे रहा. Am I audible? यस वॉइस सर. ब्रेक हो रहा है. आप भी ऑडिबल. हाँ, अभी आ रही है आवाज मेरी? यस सर, अभी आ रहा है. Am I audible? Am I audible? अभी वापस ब्रेक हो रहा है. यस सर. Am I audible? यस यस सर. सर. यस सर. Okay, am I audible now? Am I यस audible सर. now? यस Yes, सर. sir. यस सर. Am I audible? Just say yes or no. यस Yes, sir. सर. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yeah. So is it visible? So what I can do यस is सर. I can make this as my first group. This is my group number 1. This is my group number 2. This one is still remaining. So what I need to do? Can I make an individual group, or do I need to combine this with this one? कंबाइन कंबाइन. Combine, because the priority is always given to a pair. ग्रुप. Okay. So group को आपको पहले priority देना पड़ेगा. So this will become which group? Group number 3. 3. So your function can be made of 3 groups, which is group number 1 plus group number 2 plus group number 3. Okay, I'll just change the color. Okay, so
Just tell me what is group number one. Group number one is this one. Okay, so tell me what is something which is common. What is common? A bar, A bar, A B bar, bar. B So bar. B bar. A is bar, B common. bar. A is common. B is also common. C is changing. C is changing from 0 to 1. But A is still remaining as 0. B is also remaining as 0. Since A is 0, it should be referred as A bar or A. A bar. A bar, A bar. B is also 0, so bar. it will be referred as B bar. B Okay. bar. Plus group number 2. What is group number 2? What is common in group number 2? It is B and C is common. So B B, is C 1. bar. So it is B B and C is bar. C with bar. bar. C bar. So B plus C bar. Now group number 3. Go with group number 3. What is common? A is common and A and Yes. B. B is common. Okay. And both are 1. So we'll be taking as A, A B. B. A B. Okay. So everybody got this as the answer? Yes, sir. Yes. Yes. Yeah. So this is the final answer that you get. Okay. What are the other ways of doing it? How you can solve it? अगर आपको एग्जाम में ऐसा दिया गया है कि आपको इसको सिर्फ मिनिमाइज करना है, but they didn't have mentioned that you need to minimize with K map. अगर आप चाहो तो आप इसको बुलियन अलजेब्रा से भी कर सकते हो. So can you tell me the SOP function of this? What is the SOP function? F of A, B, C. Tell me the SOP function. Tell me SOP function. Zero का मतलब And 0. 0 0 0. and 0 0 0 is what? A bar, A bar. B bar, C bar. Plus what is 1? 1 is nothing but 0 0 1. 0 0 1 का मतलब A bar, 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 B B. bar, B bar. C. C. What is 2? 0 0 1 0. 0 1 0 is A A bar, bar, B, A C B, bar. C bar. B C bar. What is 6? 1 1 0. 1 1 0 is A, A, B, B, C bar. C bar. C bar. And what is 7? A, B, C. 1 1 1. So this is A, B, what C. you get as the SOP. After this, that please take common. So you'll get C bar plus C. वो हट जाएगा. फिर इसमें A B कॉमन ले लोगे आप, तो उसमें से A B बच जाएगा, और फिर बाद में दूसरे में से कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिल जाएगा. रिमूव दैट एज वेल. तो फाइनली आपको आंसर यही मिलेगा जो इससे मिलेगा. ओके, बट इट विल टेक सम टाइम. यहाँ पे आपका वो चीज फटाफट हो जाएगा. इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, quickly another example. F of A comma B comma C. Okay, summation of small m 1 3 and 5 6. Solve for this and tell me the answer. Sir, Yes. ये ग्रुपिंग करते तो ग्रुप को नेम भी करने का. हाँ, ग्रुप को नेम भी कर दोगे तो अच्छा रहेगा. वो दिखना चाहिए एक्चुअली कि हाउ मेनी ग्रुप यू हैव फॉर्म. ओके, Okay, sir. so that grouping का name you can give it into Roman or you can just write on G1 or G2. ऐसा भी चलेगा. So it is your choice how you want to name them. Different book uses different nomenclature. It is your choice, whatever you feel like. Zero. Sorry, this is A. This is B, C. Please try to write down at least इतना तो लिखना चाहिए आपको. ओके, 0 0 0 1 1 1 1 0. अंदर M0 वो सब डालने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन एटलीस्ट इतना लिखना चाहिए. बाद में फिर 1 और 0 आपको मैप करना पड़ेगा. सो 1 विल बी ओवर हियर. दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 6. तो ग्रुप ऑफ किसका बनेगा? Group of 4. ग्रुप ऑफ 4. यू गेट एग्जैक्टली वन ग्रुप. और कोई ग्रुप बनेगा? और कोई ग्रुप नहीं. मिलेगा? नहीं बनेगा. सर, आपने 7 की जगह पे So you'll 1 get ले exact- लिया. what is आपने the- 6 Sir, किया है. Seven to That's the a power. fifth wrong Sir, answer. Yes. की जगह पे 1 सर है. जगह पे- M7 के जगह 1 लिखा है. Oh. M6 है वो. Okay, fine. Sorry. Single group This is आएगा. 0. This is 1. नहीं, तो मेरे को पूरा चेंज करना पड़ेगा. Okay, just tell me the answer. Anybody got the answer? 7 डाल दो ना. 7 डाल के वहीं से कंटिन्यू कर दो सर. मैं चाह रहा था करने के लिए, मैं लेकिन एक ही तुम लोग ने change ऑलरेडी लिख करना लिया था. होगा इसके लिए. नहीं, लेकिन तुम लोग का फिर वो पूरा हो जाता ना, कंफ्यूजन हो जाता. ऑलरेडी वो ग्रुप बन गया था ना वहाँ पे इसके लिए. ठीक है. A B C. This is 0. This is 1. This is 0 0.
this is 0 1, this is 1 1, this is 1 0. So 1 पे there is 1, 3 पे there is 1, then 5 पे there is 1, and then 6 पे there is 1. बराबर ना? This is okay ना? हाँ अभी सर बराबर है? Yeah. So how many groups I'll have to make? So this is group number 1, 1 this is group number 2, and ये क्या होगा? सिंगल Single. This has to be made as individual. So group number 1, group number 2, group number 3. Anybody got the final answer? Yes. Everybody got the answer? Right, Okay. Dhanabad, Just check whether you're getting the correct answer. Okay. So group number 1, yeah. So for nothing but it is equal to 1 plus 2 plus 3. So group number 1, which is this one. So the common thing that they have is B bar and C, I think. Yeah. B bar C plus group number 2 has A bar and C. A bar C plus group number 3 is 110. 110 is A, bar. B, C bar. Everybody got this as the answer? यस सर Yes, sir. Good. Okay. सर थोड़ा One सा last example. चेंज किया तो चलेगा ना? चलेगा चलेगा. वो as per the what was the first rule? A plus सर B मैंने is ए equal हाँ to मैंने B plus A. हाँ Right, सर हाँ? वही तो मैंने पर ए तो को पहले चलेगा. ले लिया है. चलेगा चलेगा चलेगा. As per the Boolean law, it is allowed. A plus B is equal to B plus A. Okay. 4 variables. Okay. So this, sorry, not this, this one. This one I can get as straight a group of 8. Everybody agrees with this? यस सर यस सर Yes. That is 1. उसके बाद just tell me what I'll get as 1. 1 की value क्या आएगी? Can someone tell me what is common? बी So 0, it is 1. यहाँ पे it is B. Yeah. So everybody got this as B? यस यस सर. सर Yes. Yeah. We'll go for the next group. Okay. Next is I need to cover. So this 4 can I make as this as Yes, sir. 4 group? यस So this I'll make as a group of 4. यस Okay. और कौन सा बचा? This one is still remaining. वो This पूरा one is still remaining. सर ये पूरी लाइन का एक 4 का ग्रुप. This हाँ 4 सर I can make as well. Yeah. होगा So this Yes, 4 sir. I can make the group of 2, and this 4 I can make as a group number 3. So tell me group number 4 क्या आ रहा है? Group number 2 क्या आ रहा है? What is group number 2 that you will get? This 4. I think A is common, and then I think B A is bar common. D. Right? ए So बार it is डी A bar plus A bar D. ए बार डी. So this, yeah, so C this bar is D, A yes. bar D. This is A bar D, right? यस सर Now we need to talk about this group, this one. सी बार डी So what is common? C bar D. So it is 0, Yes, what sir. is common? Yeah, so it is C bar D plus C bar D. Everybody got this as the final answer? Yes, जो भी sir. जिनको भी Yes, दो का sir. group आ रहा Yes, है, they are wrong. जिनको ये अगर आंसर आ रहा है, I think they should get that as the answer. और जिनको अगर दूसरा मिला है, you'll try to minimize it. I'm sure आप उसको और minimize कर सकते हो. सिंप्लीफाई से हो रहा है. Yeah. So finally, basically K-map का reason ये है कि आपको minimize ना करना पड़े. अगर minimize करना पड़े इसका मतलब आपने K-map में फिर गलती किया पहले. Okay. Everybody understood this? यस यस सर. सर Yeah. So एक सवाल ये आया था कि अगर मैं इस चीज को कन्वर्ट करना चाहूँ, okay, I'll just erase this whole thing. So the question was basically कि इसको मैं कॉमन लेके कैसे कर सकता हूँ? Okay, so I need to write down the SOP function for this. So can someone tell me what is the SOP function for this? SOP of f, a, b, c, d. Just tell me the SOP. अगर 1 है इसका मतलब क्या है?
1 को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ 0 0 0 1. So what is 0 0 0 1? It is A bar, B bar, C bar, D. bar, B bar, C bar, D. D plus what is 3? Just write down in 4. 3 को कैसे लिखोगे? 0 0 1 1. A bar, B bar, A bar, B bar, A C, D. bar, B bar, C D. Very good. आगे बोलो 4 का क्या लिखोगे? A bar, A bar, B bar, C, B, D bar. C bar, D bar. A bar, B, C bar, D bar. बराबर यही आया आपका भी. How to write 5? How to write 5? How to represent 5? It is 0 1 0 1. So it is A bar, B, C bar, D. C bar, D. Okay. How to write 6? It is 0 1 1 0. It is A bar, A bar, B, B, C, C, D bar. D bar. Okay. Good. 7 0 1 1. What is 0 1 1? A bar, B, A C, bar, D. B, C, D. Very good. How to write 9 1 0 0 1? 1 0 0 1 is A, B A, bar, B bar, C bar, D. D. What is 12? 8 4 12 1 1 0 0. 1 1 0 0 is A, B, C bar, C bar, D bar. plus how to write 13? 1 1 0 1. A, B, C bar, D bar. A, B, C bar, D. बराबर D bar. बराबर लिखा ना मैंने 13. Yes, sir. 13 is what? 13 is what? 1 1 0 1. Yeah. Correct. Yeah. 14. How to write 14? A, B, C, D. A, B, C, D bar. बराबर ना? 14 is A, 15, B, C, D bar. And 15 A, B, is C, D. A, B, C, D. So this is how you'll get. After this, what you need to do? You need to take something which is common. So what common thing that you can see? इनके दिख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा. A bar, C. A bar B, A bar B. Just take A bar B. A bar B. A bar B. You will get common from this also. A bar B. Just हाँ यहाँ पे A bar B क्या common मिल जाएगा. A bar B यहाँ पे get common. So this 4 you just take common A bar B. Okay, so what you get? C bar D bar plus C bar D plus C D bar plus C. Okay, now within this you need to take C bar as common, then D bar plus D will become 1. After that C bar plus यहाँ से C common हो जाएगा, then C bar plus C will become 1, and finally what will get? A bar B. समझ में आया ना? Is it clear? yes, sir. Is it clear? So you just need to take common, and just check whether are you getting the same answer that you are supposed to get through K1. Okay? So do it on your own. If you have any doubt, I'll solve in the next class. I think I'm running out of time. 20 minutes extra. Anybody has a doubt, they can stay behind. The rest of you guys can leave. Thank you guys so much. I'm stopping the recording. Is there any doubt here? No, sir.